नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, का डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एज नेम सजेस्ट हियर, electrostatic means here our charges are at rest, and potential energy means we are going to deal with energy which is due to the position and configuration of the system. And as here we are discussing about electrostatic potential energy or electric potential energy, we have to deal with electric forces and charges rather than gravitational forces and masses. As in class 11th, we have studied that the potential energy is stored when an external agency done a work against some force like a spring force or gravitational force. And here, since we are dealing with the electrostatic potential energy, so we have to assume that the electric field, or we have to deal with the electrostatic forces. So suppose that we have a configuration of charges like this. This is a Q1, this is a Q2, this is a Q3, this is a Q4, Q5, and so on. There are Qn charges. This is a system of point charges. If they are in equilibrium and you want to disturb their configuration, means if you want to shift Q5 from here to here, so you have to do work against the electric fields of these all charges, and that work done by you after ds is stored as a potential energy in the system. U is equal to W is equal to F dot ds is stored as a potential energy. So here we can say that the electrostatic potential energy, the electrostatic potential energy is due to the is specific configuration of charges in a system. And since here we are dealing with the discrete system, means point charges are assembled together, interacting together. But if we have a continuous charge distribution, then we can change the definition as, we can say that the electrostatic potential energy of a charge distribution is due to configuration What it means, it means that, suppose that we have a volume charge distribution, and the volume charge distributed over the sphere of radius capital R,
So here is the potential energy, which is non-zero of course, and may have some value. I am not interested here to calculate it. But if same charge Q is distributed over a ring, the expression of potential energy and amount of potential energy changes drastically, because configuration of charge distribution here and here varies. यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्फ़िगरेशन है चार्जेस का, और यहाँ पे जो चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन वो सेम नहीं है. So the electrostatic potential energy of a charge distribution is due to the configuration. Configuration अगर आप distribution का change करेंगे, then you have to do some work, and that work done is associated as the potential energy in the system. अभी इतना तो क्लियर हो गया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है. इट इज़ वर्क डन, इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन. ये नहीं कहते कि इट इज़ द वर्क डन, इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट some force, and here in this case it is a work done against the electrostatic force. And since if we have a charge configuration, if we have a charge distribution, suppose that lot of charges, we have a bunch of charges here, q3 q4, lot of charges here, and another charge bring near to it from here. Suppose that this is a point P1, I am bringing Q0 from P1 to P2. We have to do work against the electrostatic force, because electric field of this system is present here, and the electric field applying a force F is equal to Q naught E, and opposes the motion of Q naught, and opposes the motion of, since this is a positive charge, and of course I am taking these are the positive charges. So यहाँ पर भी फोर्स प्रेजेंट है और यहाँ पर भी फोर्स प्रेजेंट है पॉइंट P2 पर. पहले जब P1 को कहीं से लेके आए होंगे, चार्ज Q0 को P1 पे लेके आए होंगे, तब भी तो इसको वर्णन करना पड़ा होगा. तो यहाँ पर भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वी कैन से इट इज़ U1. यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वी कैन से इट इज़ U2. So here, if we are going to displace a point charge from one point to another point inside the electric field, then we are not calculating the absolute amount of potential energy. Actually, we are calculating the difference in potential energy. And of course, we are interested in, हम इसी में interested होते हैं, हमें absolute amount की ज़रूरत भी नहीं होती है. But if you want to set a zero potential energy, then we must find a region where potential energy is zero, and potential is zero only when F is equal to 0. Only in the case when force is 0, then potential energy is 0. So we have to set a reference point. जैसे यहाँ पे reference point कहाँ पे था, P1 पे था. हम क्या करते हैं, reference point को कहाँ सेट कर लेते हैं, इन्फिनिटी पे सेट करते हैं, very far away from this charge distribution. कितना far away? As far as there U इज इक्वल टू ज़ीरो. जहाँ तक इसके फोर्स का इन्फ्लुएंस न हो, उसके बाद हम Q नॉट की प्राइमरी लोकेशन लेंगे, बिकॉज देयर इज़ U इज इक्वल टू ज़ीरो. और उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हुए Q नॉट को अपने सिस्टम की ओर मूव करेंगे. हमारा सिस्टम जो भी हो, वट एवर द सिस्टम, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, या प्लेन शीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मे बी. बट एज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम इतनी टिपिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करने वाले हैं. यहाँ पर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट चार्ज होगा और टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव कर पाएँ. तो अगर हम एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो हमारे पास सपोजिशंस क्या होंगे, हमें कोई सिस्टम एज्यूम करना पड़ेगा और टेस्ट चार्ज को उसकी तरफ क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. So let us take an easiest system, and this is a point charge, of course. Q is a point charge, and for simplicity, let us take the position of point charge at 0 comma 0 comma 0, means this point charge is at the origin, and for convenience, सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम टेस्ट चार्ज को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेकर के आएंगे. ये वाई एक्सिस लेट कर लेते हैं और ये लेट कर लेते हैं क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है. ये हमारी एक्स एक्सिस है. ये 0,0 पर है ताकि डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हमको कोई तकलीफ़ ना हो. हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज़ द बाउंड्री. लेट मी अज्यूम दैट दिस इज़ द बाउंड्री. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज की फील्ड का इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है, बट मान लेते हैं यहाँ पर फील्ड इसकी क्या ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकती है. दिस पॉइंट इज़ वेरी फार अवे. दिस इज़ द इन्फानाइट पॉइंट. दिस पॉइंट इज़ इन्फानाइट पॉइंट फॉर, इसको मैं आर इक्वल टू इन्फानाइट लेट कर लेता हूँ. किसके लिए, फॉर क्यू. क्यू का कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं है. अगर क्यू का कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स दैट हेयर एफ इज इक्वल टू ज़ीरो. एफ ज़ीरो है, सो ऑफ कोर्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो है. मतलब इस पॉइंट को हमने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लिया. जितनी भी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे. ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है. किसकी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू. क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है. इस रीजन में जैसे ही हम एंट्री करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, क्यू नॉट को बाहर की ओर रिपल करना स्टार्ट करेगी. लेट दिस चार्ज क्यू नॉट बी शिफ्टेड टुवर्ड द क्यू. क्यू की ओर शिफ्ट करते हैं. एंड फ्रेंड्स, एज वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is inverse square law. F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r square, means this is a variable force. So we have to use method of integration here. मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना होगा, पाथ का एक छोटा सा एलिमेंट टेक करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे और पहले उस एलिमेंट के अलॉन्ग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट from infinity to particular point where we are going to place the q naught. Let us suppose that the element is here. This is the element dx. x डायरेक्शन में यही easiest way, dx मैंने element ले लिया. And the distance of element, this is a very small element, this is very small element of path. हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि dx is at a distance x from center. और अगर हम फोर्सेस यहाँ पर देखें तो वी आर पुशिंग द क्यू नॉट टुवर्ड द क्यू. तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, एफ ई एक्स टी डिनोट करता हूँ इसको. एक्सटर्नल फोर्स इधर की ओर होगा, पर सिंस दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो ए पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन जस्ट अपोजिट टू इट. These two forces are just opposite to each other. F denotes for electrostatic force. And now suppose that I am willing to put that charge where, to put here at point P, and that point P as a distance r away from the Q. So first of all, I am going to calculate the work done for this path length. एक बात का ध्यान रखिए, we are interested in work done by external forces and which are against the electrostatic forces. So work done by, इसको सेपरेट कर देता ताकि मर्ज ना हो जाए डिस्कशन में. वर्क डन बाय external force along element of path
dx, dx, dw. By definition, this is given by f external dot dx, f external dot dx. अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस तरफ को है और एफ एक्सटर्नल भी इस तरफ को है, मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। बट एक्चुअली यहाँ पर एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं, सो यहाँ पर एक सपोजिशन और होगा कि मोशन इज सो स्लो, इतना स्लो मूव कर रहे हैं क्यू नॉट को, दैट देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन, एंड एट ईच पॉइंट ऑफ द पाथ एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी पाथ के किसी भी पॉइंट पे इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट सिंस दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, so we have to put a negative sign when we are replacing external force by electrostatic force. So here this is f external dx, and since if external is equal to minus fe, so we can say that therefore dw is equal to minus fe dx, minus fe dx. This is the dw. Now the work done in bringing q naught from infinity to point P W is equal to integration of dw, and of course limits are इन्फिनिटी से लेकर क्या है, कहाँ पे, पॉइंट P, मीन्स एट पॉइंट डिस्टेंस r, इन्फिनिटी टू r. dw की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू r fe dx. fe की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, fe की वैल्यू क्या होगी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी टू r 1/4π0 q, प्रोडक्ट आप चाहे q नॉट, r नहीं लेंगे यहाँ पे, कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे dx को, q नॉट ओवर x स्क्वायर एंड dx. Take the constants out of the integral, q naught over 4π0 are constants, minus infinity to r 1/x square dx minus q naught over 4π0, and of course we can write it as x to the power minus 2 infinity to r and dx minus q naught over 4π0. इंटीग्रेशन फार्मूला यूज़ करेंगे, x to the power n plus 1 over n plus 1, so we get here minus 2 plus 1 minus 1 minus 2 plus 1 minus 1. Limits are from infinity to r. And now w is equal to, this minus sign kills this minus 1, and we get 1/4π0 q naught over 4π0. Upper limit means 1 over r minus lower limit 1 over infinity, and 1 over infinity is a 0, so we get w is equal to 1/4π0
q naught over r, q naught over r. This is the work done in bringing charge q naught from infinity to a point P inside the electric field of charge q, inside the electric field of charge q. फ्रेंड्स यहाँ पे सपोजिशंस क्या है? सपोजिशंस आर दैट q is a point charge and assume that it is held fixed as 0, 0. ओरिजिन पे फिक्स है, अगर फिक्स नहीं होगा तो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप भी चेंज हो जाएगा. And q naught is a test charge, means it is so small in size as well as in magnitude that it cannot change the configuration of electric field at that point, at that point, at that point. कहीं भी लेके आएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेगा. ये एज्यूमशंस लेकर के हमें चलने पड़ेंगे. अगर ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे तो द डिस्कशन विल बी डिफरेंट. हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सब गलत हो जाएगा. देयरफॉर स्टिक टू द assumptions that q naught is a very small in magnitude as well as in size and q is held fixed as 0, 0, 0. And since this is a work done and against the electrostatic force, so this work done is stored as a potential energy. This work done is stored as a potential energy, in the system. So U is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q naught over r. This is a very simple system of two charges q and q naught. Now I am going to discuss that if we have a complex system, means if we have a system of charges where more than 2 or more than 3, if there are number of charges present at different positions, then how to calculate the potential energy of the system? Potential energy of system of charges. System of charges. Let us suppose that we have many charges in a system: q1, q2, q3, q1, q2, q3, q4, q5 डाटा डॉट कितने qn चार्जेस हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में. क्या किया मैंने? असेंबल कर रखा है उनको. मुझे इस सिस्टम की क्या निकालनी है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी. वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. What it means? It means that we have to calculate the work done, net amount of work done to assemble the system. इस सिस्टम को असेंबल करने में जो भी वर्क डन किया है वो क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. सेम एज कैसे? सपोज दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग द ब्रिक्स फ्रॉम ग्राउंड टू द रूफ. छत पे आप ईंटें चढ़ा रहे हैं जैसे 1 by 1. एक लेके जाएंगे कुछ वर्क डन करेंगे, 2 लेके जाएंगे कुछ वर्क डन करेंगे, 3 लेके जाएंगे कुछ वर्क डन करेंगे. इस तरह से जो ब्रिक्स का लॉट है वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या हो रही है? कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. सेम हैपन्स है. पहले हम क्या करें? q1 को लेके आएंगे, फिर q2 को लेके आएंगे, फिर q3 को लेके आएंगे, फिर q4 को लेके आएंगे, q5 को लेके आएंगे, फिर q1 को भी लेके आएंगे. तो सपोजिशन ये है कि चार्जेस आर ब्रिंग 1 by 1 फ्रॉम इन्फिनिटी. पहले हमने क्या किया था? ये सिस्टम असेंबल करने वाला हूँ तो पहले मैं इन्फिनिटी से q1 को लेके आऊँगा. जब मैं q1 को लेके आऊँगा, कहाँ से? इन्फिनिटी से q1 को ले करके आ रहा हूँ. ये q1 को मैं ले करके आया हूँ. यहाँ पर पहले से कोई पॉइंट चार्ज नहीं था. इसका आंसर ये हुआ कि q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में मुझे कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा. कोई वर्क डन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट नहीं है. सो हेयर W1 is equal to 0. Why?
because there is no electric field. There is no any electric field. Electric field present in the region of interest, जहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ कोई फील्ड नहीं। Q1 अब यहाँ पे आ गया, Q1 इसे है। अब आप Q2 को लेके आएंगे, Q2 को लेके आया मैं, Q2 को यहाँ से, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, Q2 को लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही आप इसके फील्ड में एंट्री करेंगे, Q2 पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और Q2 का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ वर्क डन होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन in bringing Q2 from infinity, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं कहाँ पे, एट सेपरेशन R21। ये नोटेशन मैंने इसलिए लिया हुआ है, R2 मीन्स पोजिशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। R21 कहाँ से, फ्रॉम Q1। Q1 से R21 पोजीशन पे मैं Q2 को लेके आ रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं पूरा कैलकुलेशन दोबारा नहीं करने वाला हूँ। इट इज़ 1/4πε0, जैसे मैं कर चुका हूँ पहले। क्या हो जाएगी, Q1 पहले से ही था, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाय R21। अगर हम नेक्स्ट चार्ज को लेके आते हैं, इफ वी ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी, देन अब Q2 यहाँ पे पहले से आ चुका है, Q1 भी है यहाँ पे, तो Q3 को अगर हम इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो वी हैव टू फेस फोर्सेस ऑफ बोथ Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फेस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमें दो टर्म्स इंडिकेट करने पड़ेंगे। वी ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी, वी हैव टू वर्क अगेंस्ट force of Q1 and Q2 both. Therefore, it is W3 1/4πε0 Q1 Q3 over R किसकी पोजिशन है, Q3 रिस्पेक्ट टू 1। दिस टर्म is a work done by external agent against the electrostatic force of Q1, and this term is a work done against the electrostatic force of Q2 in bringing Q3 at a position of R32, means position of 3 with respect to 2. Similarly, if you want to bring another charge, then 1/4πε0, मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ, बल्कि लगता है बार बार लिखने में। तो Q4 को लेके आएंगे तो पहले Q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, F1 के अगेंस्ट, मीन्स Q1 का जो फोर्स होगा उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो Q4 ओवर R4, फिर Q2 का जो फोर्स होगा उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, मीन्स Q4 डिवाइड बाय R42, फिर Q3 के फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, मीन्स Q4 अपॉन R43। इस तरह से कई टर्म्स आ जाएंगे। सिमिलरली
Similarly, when we bring nth charge, then Wn is equal to 1 over 4 pi epsilon नॉट, पहले क्या करेंगे, Q1 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क डन किया जाएगा, वो नोट करूँगा मैं, Rn1. This term indicates the work done in bringing a Qn against the electrostatic force of Q1. And now Q2, Qn, Rn2 प्लस एंड सो ऑन. इसको सभी से अपोजिशन फेस करना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स कितने चार्जेस से, n-1 चार्जेस से अपोजिशन फेस करेगा, Qn-1 और Qn, and the position of it Rn with respect to n-1. And as we are trying to calculate the total potential energy of the system, so we have to sum up all these terms. I am going to sum up all these terms. The total wrong word, the net amount of work done, W is equal to W1 plus W2 plus W3 and so on, Wn. यहाँ पे देखिए, एक for simplicity I am going to apply a trick here. W1 is equal to 0, of course. W1 is equal to 0, and of course what is the common here, 1 over 4 pi epsilon naught is common in all terms, common ले लिया बाहर. W2 क्या होगा, Q1 Q2 over R21. यहाँ पे देखिए W3 में भी Q1 का एक टर्म होगा, W2 में Q1 का टर्म है, W3 में भी Q1 का टर्म है, W4 में भी Q1 का टर्म है, और इसमें भी Q1 का टर्म है. तो curly bracket inside the square bracket, and it is for Q1, means Q1 Q2 over R21, this term, and now this term, plus Q1 Q3 over R31, plus now this term, Q1 Q4 divided by R41, this term, and so on. सारे चार्जेस को Q1 से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा. Q1 Qn डिवाइड बाय Rn1 प्लस, इस आइटम नोट कर लें, प्लस Q2 कीवर्ड टर्म आ चुका है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि Q2 Q3 R32 प्लस Q2 Q4 R42 and so on, Qn Q2 divided by Rn2. This term is for Q2. As going on, the last term is Qn minus 1 Qn divided by Rn n minus 1. If someone trying to use the notation of summation here, so look at very carefully. We have to apply summations for different brackets. Look here, summation run over Q1 is constant. Q1 हर एक टर्म में एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Q1 को ऐसे लिख लेता हूँ बाहर, एंड समेशन
आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो 1 तो सबके साथ में, स्टार्ट इज फ्रॉम 2, 2 कहाँ तक गया अप टू n, Q2 ओवर R n1, समेशन पुट करोगे जैसे ही सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, देन प्लस ये वाला टर्म समेशन आई इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट है, और ऑफ कोर्स Q2 इज आउट ऑफ द समेशन, 3 to n Q3 डिवाइड बाय RI2, एक टर्म और लिख लेते हैं, Q3 होगा यहाँ पे समेशन, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा, 4 to n, एंड ऑफ कोर्स here Q4 डिवाइड बाय RI3 plus n, so on. Now we have n terms of summations, so I am going to use summation over summation, summation of these terms, इन डाइस चेंज कर लेता हूँ, j यूज़ कर लेता हूँ, j कहाँ से स्टार्ट है, स्टार्टेड फ्रॉम 1 कहाँ तक जाएगा, n-1, इस वाले टर्म का n-1 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, Qj, j is equal to 1, j is equal to 2, j is equal to 3, and summation I is equal to, देखिए i की वैल्यू क्या है यहाँ पे, j is equal to 1 है तो i is equal to 2 है, तो यहाँ पे i is equal to क्या हो जाएगा, j plus 1, यहाँ पे देखिए j is equal to 2 है तो i is equal to 3, हमेशा j plus 1, और कहाँ तक रन करेगी, n-1 तक रन करती है, और यहाँ पे QIs हैं, sorry this is not n, this is I, QI RIJ, this is the total work done. So the potential energy of the system U is equal to 1/4 pi epsilon naught summation j is equal to 1 to n-1 bracket Qj summation I is equal to j plus 1 n-1 Qi over Rij. Now discussion is over, but some points are to remember. First point is that if you are trying to calculate the potential energy of a system, you must have to calculate interaction of all pairs of charges separately, like this. We have to calculate interaction of all pair of charges separately, means Q1 Q2, then Q1 Q3 Q2 Q3, then Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, सारे चार्ज का इंटरेक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आएगा गोइंग टू बी रॉन्ग। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट हमेशा ध्यान रखिए कि कोई टर्म दोबारा अपीयर ना हो, एंड ऑफ कोर्स द पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो वेयर at the infinity, where force is zero, so that's all about potential energy. And if you have any doubt, you can comment in comment box.